यहाँ पर प्रक्षेप जिसकी दिक् कोज्यां जिसके DCS क्रमशः L M N है। तो इसके पहले हम निकाल लेते हैं क्या मूल बिंदु ओरिजिन O को पॉइंट P X1 XYZ से मिलाने वाले रेखाखंड का मान लाइन सेगमेंट का उस रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिक् कोज्याएं L M N है। Origin x-axis, y-axis, z-axis. We have given that and another line in a space. Its DCS are L, M, N. OP point P, X, Y, Z. We have given that two things. A point P, X, Y, Z. OP line segment and another line नेमिंग कर देते हैं L, another line capital L. Its direction cosines are L, M, N. Now we want to find out projection of OP on straight line L. What should be projection of OP on since line segment OP is made by three line segments OM, ON and OQ. Are projection of OP, projection of line segment OP on x-axis is OP, OM. Projection of line segment OP on y-axis is ON and projection of line segment OP on z-axis is equal to OQ. It means projection of line segment, since line segment OP is made by three projections OP, OM, ON and OQ. तो चूंकि जो OP है उसके x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस पर प्रोजेक्शन, लाइन सेगमेंट OP का x एक्सेस पर प्रोजेक्शन OM, y एक्सेस पर प्रोजेक्शन ON और z एक्सेस पर प्रोजेक्शन OQ है। अर्थात OM, ON और OQ का L पर प्रोजेक्शन का सम OP का L पर प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन थ्योरम से अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन थ्योरम, projection of OP on straight line L is equal to projection of OM on L plus
projection of ON on L and projection of OQ on L. Since projection of OP is made by three projections OM, ON and OQ on x-axis, y-axis and z-axis respectively. So projection of OM, ON and OQ on L gives us the projection of OP on L. The sum of projection of OM, ON and ON on L will be always equal to projection of OP on L. Since let up consider L makes an angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively. हमने सपोज किया कि जो गिवन स्ट्रेट लाइन L है ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गैमा एंगल बनाती है. देन projection of OM on L is equal to OM cos alpha. Again OM will be equal to x, so projection of it will be equal to x cos alpha. Again straight line L makes an angle beta with y axis. Angle between O and L is beta because y axis makes an angle beta with L. So angle between O and L will be beta, and so projection of ON on L, similarly projection of ON on L is equal to length of ON cos beta, and again ON is equal to y because coordinate of P is y, so ON will be y. Then we get y cos beta. Similarly projection of OQ on L is equal to OQ cos gamma is equal to Z cos gamma. OP जो है OQ इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट Z एक्सेस का P किसके इक्वल हो जाएगा Z की, तो OQ इक्वल टू Z. चूंकि L Z एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाती है गैमा, तो OQ का L पर प्रोजेक्शन कितना हो गया लेंथ ऑफ OQ इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन L के साथ ON कितना एंगल बनाएगा जो Z एक्सिस के साथ L बना रही गैमा. तो सो प्रोजेक्शन ऑफ OP on L straight line L will be x cos alpha plus y cos beta plus z
cos gamma plus z cos gamma. Since we know that cos alpha, cos beta, cos gamma is represented by lmn, so we can write it lx plus my plus nz. इस तरह से किसी पॉइंट P एक्स वाई जेड को मूल बिंदु ओरिजिन O से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का किसी अन्य लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस lmn हो पर प्रोजेक्शन lx प्लस my प्लस nz होता है। फिर से ध्यान से सुन लो, क्या बोल रहे हैं? मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन से किसी पॉइंट P एक्स वाई जेड को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का किसी स्पेस की अन्य लाइन L जिसके डायरेक्शन कोसाइंस lmn हो पर प्रोजेक्शन lx प्लस my प्लस nz होता है। चूंकि इसी तरह से तो lx प्लस my प्लस nz, where xy and xyz are the projection of OP on x-axis, y-axis and z-axis. We can write it that DCS of L into projection of x-axis, projection of OP on x-axis plus DCS of L into DCS of L on x-axis, DCS of L on of y-axis into projection of OP on y-axis and DCS of z-axis on L into projection of OP on z-axis. इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि यदि कोई 2 पॉइंट्स हो, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो एक और हमें मिल जाएगा डेरिवेशन। PQ straight line LMN y-axis and it is z-axis. PX1 y1 z1 QX2 y2 z2। अब किन्हीं 2 पॉइंट्स PQ को PX1 y1 z1 QX2 y2 z2 को ज्वाइन करने पर बनने वाले लाइन सेगमेंट PQ का अन्य स्ट्रेट लाइन L पर प्रोजेक्शन, जबकि L के DCS LMN हो। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने OP का x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकाला था, अब हम PQ का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन, PQ का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होता है x2 माइनस x1, y एक्सिस पर प्रोजेक्शन y2 माइनस y1 और z एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा z2 माइनस z1। तो हम लाइन सेगमेंट PQ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, PQ on x axis, PQ on y axis, PQ on z axis. Projection of PQ on x axis will be x2 minus x1. Projection of PQ on y axis y2 minus y1 and projection of PQ on z axis will be z2 minus z1. And direction cosines of given straight line L is LMN. So projection of PQ on L
is equal to L into x2 minus x1 plus m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1। माने कहने का मतलब किसी लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन करने से बनी हो, उसका किसी अन्य लाइन पर जिसके DCS LMN हो, प्रोजेक्शन क्या होता है? L into projection of PQ on x axis, M into projection of PQ on y axis, and N into projection of PQ on z axis, and it is decided before it what? X2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. So projection of PQ on L will be L x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Thanks. Okay.